हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 8 की दूसरी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो केस है वो एक पैराग्राफ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स और लॉ or even a policy on paper does not mean that it exists in reality, because people do not follow all the policies particularly. That is why the policies on paper does not mean that it exists in reality. Next is, people have had to constantly work on or make efforts to translate these principles that guide the actions of their fellow citizens for their leaders or even their leaders. Clear? Means people have to work upon them constantly to enforce those policies, those laws in reality. Let's discuss question answers based on this passage. First question is, dash needs to constantly work on to bring equality and dignity for all. Options are government or people or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Government as well as people both have to work constantly to bring equality and dignity for all. Next question is, the rights which has been conferred on every citizen without any discrimination by Indian Constitution. Options are reservation rights or fundamental rights or acts. Answer is fundamental rights. Next question is, how does government ensures to end inequality in the country? Options are by applying laws or through reservations or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Next question is, manual scavenging means. Options are work of scavenging by machine or work of scavenging by hands or work automatic scavenging. Answer is work of scavenging by hands. दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।